got it. Okay, so ठीक है, तो ये पिछले बार का असाइनमेंट स्लाइड था जिसका आंसर आपने अभी हमको बताया. So this was Scorpion. We had asked you to spot the different colors. Did somebody see the differences in the colors of the stars in Scorpion? Devendra ji? Some stars has blue in color, and some stars looks slightly pink or red, and some white. And the brightest star Antares is looking red. Yes, it is a red supergiant, so it looks very red. फिर आपने स्टार्स का रैंकिंग बताया. अभी हम देखते हैं क्या है. ओके, तो इसमें मेरे को सर एक मैम कंफ्यूजन है एक कि जो आपने जो डायग्राम इसका दिया था, इसमें फाइव स्टार्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, लेकिन जो हम ज्यादातर देखते हैं किसी भी टैब में उसमें 3 स्टार्स ऊपर दिखते हैं इस तरह से. लेकिन इस तरह, हाँ, इसमें आपका जो डायग्राम है वो 5 स्टार्स है, 1 2 3 4 5 ऊपर, और जो हम ज्यादा देख पाएंगे उसमें इस तरह का है, 3 स्टार्स ऊपर दिख रहे हैं. ये चीज समझ में नहीं आ पाई है. तो हाँ जी देवेंद्र जी, आप सॉरी श्वेता, गो अहेड. बोलो. नहीं, मैं ये बोलने वाला था कि ये पहले तो सॉरी, थोड़ा आज मैं बाहर हूँ इसलिए मेरा ऑडियो पे थोड़ा शायद नॉइज़ी है, बट मैं ये बोलने वाला था कि जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं देवेंद्र जी. नॉर्मली हम 3 स्टार्स ही देखते हैं क्योंकि 3 स्टार्स उसमें ब्राइट है. बाकी वैसे कॉन्स्टेलेशन में और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो नेकेड आई में या फिर बहुत ज्यादा डार्क स्काई अगर नहीं होता है तो हम नहीं देख पाते हैं. तो ये जो अभी इमेज है, ये करंट स्लाइड पे, ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं, इस पे क्या होता है, इस पे ये थोड़ा मतलब एक्यूरेट इमेज नहीं है. ये जस्ट एक मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे था कि ये ऐसा दिखता है स्कॉर्पियन कॉन्स्टेलेशन. इसका जो आंसर स्लाइड है, जो दिस वन, थैंक यू श्वेता, इसमें दिस इज मोर एक्यूरेट. इसमें एक्यूरेट इन द सेंस कि इसमें जो ब्राइट स्टार है वो ब्राइट दिख रहा है, जो उतना ब्राइट नहीं है वो कम ब्राइट दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है. तो इसमें आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है. जो 3 स्टार ही ज्यादातर दिखता है. पिछला वाला इमेज बस डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे था, उसमें वो उतना ब्राइटनेस एक्यूरेट नहीं था उसका, इसीलिए आपको शायद कंफ्यूजन हुआ. बट हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 स्टार ही ज्यादातर दिखते हैं जो कि ब्राइट है. हाँ, सो स्कॉर्पियन में you can see easily around 6 to 7 stars. So you can see the head, which is Antares. Then you can see the tail star, which is Shula. Then you can also see the 3, which is at the tip of the scorpion. So these are a crab. I don't know the name of these other 2, these ones. And then you can see that another one in the tail. So generally this is what you see depending on how clear the sky is. And then there is an interesting fact about Scorpion that at least 14 of these stars have planets. So they're like sun. They have a planetary system around them. Okay, so we'll go to the next slide, which is, okay. So what did we learn from the last week? So this is the question to begin this session. What is a star in the northern hemisphere sky that does not rotate along the sky, along with the sky? देवेंद्र जी, आपका कोई स्टूडेंट से आंसर पूछ सकते हैं? Good morning, ma'am. Good morning. Pole star. Pole star. Okay. Perfect. That is the answer. Very good. Okay.
So today we will talk about spotting planets. So with the naked eye, we can see 5 planets. So the planets would be Mercury, Venus, Mars, Earth itself, that where we live on, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto is a disputed planet. Right? So out of these, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn are visible to naked eye. Um, so one thing to know about planets is because so the location of the planets, the orbital radius is different for each planet. So the Mars, which is the closest, has the smallest orbital radius as compared to say Uranus. Um, so what happens is that each of them have a different orbital time, and so you will see these planets rise and set at different times each night, and depending on the season and depending on which place you are looking at, you will have a different setting and a rising of these planets. Then also the visibility will change. For instance, they'll be dimmer when they're closer to the horizon, they will be brighter when they're higher up. So one very nice website that I really like for spotting planets is the website called thedateandtime.com. This is what it is. Like, we have the link on the slide, which you can see later. And so these days, if you go out tonight, and try to see the planets, you should be able to see Jupiter and Saturn very clearly. Okay. So, yeah, that this would be one of the things I would like you to do this week, which is like I would like that you guys go out and see Jupiter and Saturn, and tell me at what time you see them and approximately which direction you see them. Okay. All right. Then also the way you will identify different planets would be because of the fact that they are of varied colors. So color and brightness is one of the things that, so one thing you need to know about planets is that planets like Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, it's very rare that you see all 5 of them in the same sky at the same time. You will see a small amount of them. You will see 2 or 3 planets mostly. Seeing all 5 would be sort of a very like it happens, but not that often. Mercury is generally pale whitish in color. Venus is very bright. So the brightest planet among all the planets that you see is Venus. So it's very bright and it almost looks like it's a dent in the sky. Then you have Mars, which is slightly yellowish orange colored planet. You have Jupiter, again slightly dark brown, a little bit less bright than Mars. Then you have Saturn, which is very yellow. It almost looks golden in the sky. So so the assignment for this week would be, if you should go out and try to spot Jupiter and Saturn, and also pay attention to what color it is. Okay, so Ian, are you around still? Yep. Yes. Sorry, मैं बीच में थोड़ा ड्रॉप आउट हो गया था क्योंकि हम रास्ते में। Yeah. Anyway, मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ। मैंने पूरा ये स्लाइड नहीं सुना श्वेता जी ने क्या बोला, बट मोस्टली इसमें यही हम बात कर रहे थे कि कौन से प्लैनेट्स हम खुले आंख से देख सकते हैं। वो 5 है: मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। डिपेंडिंग ऑन कि साल के कौन सा टाइम है और आप कहाँ पे हो, आपका लोकेशन क्या है, सीजन के ऊपर डिपेंड करके इनमें से कोई भी 1 या 2 या फिर कभी-कभी 5 के 5 हमको ऐसे खुले आंख से दिख सकता है। जैसे कि सीजन चेंज होता रहता है तो उनका जो पोजीशन स्काई है वो भी चेंज होता रहता है, उनका जो ब्राइटनेस है वो भी चेंज होता रहता है, क्योंकि वो कभी-कभी हमसे पास नजदीक होता है, कभी-कभी बहुत दूर होता है। तो सेम प्लैनेट, मान लीजिए वीनस कभी-कभी बहुत ब्राइट दिखता है आसमान में और कभी-कभी उतना ब्राइट नहीं दिखता है।
तो ऐसा नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा जैसे बाकी तारों के साथ होता है कि वो जो भी है वो हमको सेम ब्राइटनेस लगभग दिखता है पूरे साल भर, बट प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं होता, उनका ब्राइटनेस चेंज हो सकता है, उनका पोजीशन डेफिनेटली चेंज होता है। यहाँ पे जो नीचे साइड में नीचे उनके रफ कलर्स दिए गए हैं वो मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट आजकल इंडिया में आप लोग जहाँ पे हैं वहां से आपको डेफिनेटली एटलीस्ट जुपिटर और सैटर्न दिख जाएगा आसमान में। आप अगर स्टेलेरियम ऐप यूज करेंगे जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट वीक, तो जुपिटर और सैटर्न एटलीस्ट आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप लेट नाइट पे अगर जाके बाहर देखने की कोशिश करेंगे फिर आपको मार्स भी दिख जाएगा आजकल जो पोजीशन है प्लैनेट्स की। आई थिंक दैट्स ऑल। Yeah, thank you. Going forward, तो ये एक आपको दिखाना था, which is, so this is a slide which is kind of very new in the sense that, so right now we have, it's an interesting time for astronomy in the because we have one of our very powerful satellites that is currently taking images. It's called the James Webb Space Telescope, or JWST. And last week, I think it was last week, we got one of the finest pictures of Jupiter. So this satellite has taken a picture of Jupiter like we've never taken it before. I have two pictures here. One on the left, you see the picture that is taken by this new satellite JWST of Jupiter, and on the right you have the best picture of Jupiter we had up till this point. So before we got this new image of Jupiter last week, until then we had the best we had seen Jupiter would be like the way we see it in the right hand panel, and this was using the Hubble telescope. So this is so amazing because you see so many different structures in the planet itself. You see its rings, you see its auroras, which also Earth has auroras, right? You see few of their moons, you see the ring around Jupiter. So Jupiter has a ring as well, not just, so the Saturn's ring is very well known. Everybody knows that Saturn has a ring. Jupiter also has a ring, and it took a very long time for the astronomers to find this out. It was only found in 1800. So yeah, so you can see all of it very clearly, and we're expecting more beautiful image from the satellite. So I just wanted to show you this one because it's very new and it's very hot right now in the field. Should I go ahead or do you want to summarize, Ayan? तो बेसिकली इसमें ये है कि आजकल जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही डिटेल में हमको इमेज भेजता है। इससे पहले पावरफुल जो टेलीस्कोप उससे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है हबल स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस टेलीस्कोप से जुपिटर का जो इमेज गया हुआ था वो है आपका स्पेस के राइट दाएं तरफ। बहुत कुछ सीखने को मिला साइंटिस्ट्स को जुपिटर के बारे में हबल टेलीस्कोप की इमेज से। बट आजकल हमारे पास और भी ज्यादा शार्प और भी ज्यादा क्लियर इमेज है जो कि लेफ्ट में आप देख रहे हैं, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया है। और ये जेम्स वेब के टेलीस्कोप के इमेज में आप जो नॉर्थ और साउथ पोल है जुपिटर में वहां पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, उसको हम ऑरोरा बोलते हैं। ऑरोरा होता है क्योंकि जो ऑरोरा जुपिटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर उसके सराउंड में एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, वो चुंबक जैसा बिहेव करता है। उसके लिए कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए पोल में एक स्पेशल लाइट देखा जा सकता है, उसको हम ऑरोरा बोलते हैं। वो अर्थ में भी होता है। आप अगर अर्थ में नॉर्थ पोल के बहुत करीब जाओगे या फिर साउथ पोल के बहुत करीब जाओगे तो आपको ऑरोरा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जेम्स वेब का टेलीस्कोप का जो इमेज है वो इतना अच्छा क्वालिटी, इतना शार्प है कि उसमें जुपिटर का जो अपना जो डिटेल्स है वो तो हमको देखने को मिल ही रहा है, ऊपर से हमको ऑरोरा भी देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट वाले इमेज में। और एक थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो बीच में जो एक लेफ्ट वाले इमेज में जुपिटर में एक सफेद स्पॉट दिख रहा है, राइट वाले इमेज में वही स्पॉट रेड वाला दिख रहा है, तो उसको हम जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट बोलते हैं। उसका मतलब यही है कि वो एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट है। वो रेड स्पॉट इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक
बहुत ही बड़ा तूफान चल रहा है जुपिटर में। और जैसे कि हम लोग अर्थ में, धरती में जैसे साइक्लोन्स होते हैं, ऊपर से आप देखे सैटेलाइट इमेज अगर देखे तो ऐसे ही सर्कल जैसा दिखेगा, ऐसे गोल दिखेगा। तो जुपिटर में जो ये सर्कल दिख रहा है वो भी उसी की एटमॉस्फेयर में, उसी की वायुमंडल में वो एक बहुत ही बड़ा तूफान है। वो इतना बड़ा है, ये जो ऑरेंज स्पॉट आपको दिख रहा है वो अर्थ से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। बस उतना स्पॉट हमारे धरती से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जुपिटर खुद भी तूफान है, वो धरती से ज्यादा बड़ा है। दैट आई थिंक वो ओवर टू यू। Ayan? Yeah, Ayan, Yep, I think over to you. your connection is kind of going in and out. I think Sweta, you can continue Okay, from I'll, here. Yeah. yes. Sure. Yes, please go. All right. So then this is something touching back to something that we were talking about last time, which is, oh shit, sorry. Hold on. Yes. So if you have ever taken a long exposure picture of a city's traffic, you would have seen streaks of light. Like for instance, in this image, we see that instead of you seeing the lights of the cars, you just see streaks. And this is happening because you have a camera that you're taking a long exposure photo. And as the vehicle moves through the road, you are still collecting light that is coming out of the car, right? So so have you guys seen something like this before? Have you guys seen this kind of light trails in long exposure photos? Hello? Devendra ji? जी Is this familiar to you? Like, have your students seen this kind of long exposure photo where you take a long exposure of a city and you see the the lines of the light on the road? यस यस Yeah. फैमिलियर Okay. So now this is something called a star trail, which is a very similar phenomena. And this happens because, so like how we were telling in the last class, the North Star remains fixed and the rest of the sky moves around the North Star, right? And this happens because the North Star is aligned with the axis of the Earth. So if you take a long exposure photo of the sky, so if you keep your camera's exposure for, I don't know, something like 5 minutes or longer, for like 20 minutes or something, what you see is that you see the sky moving around the North Star. So the point about which you see all of these circles over here, this will be the north, okay, the axis of the Earth, the northern axis of the Earth. And you see the star tracks going around, which is very similar to how you would have seen these light trails on a city landscape, right? So this is one of the things that is very popular photograph that is taken in by astronomers, like amateur astronomers especially, like to see the star tracks. It's a very beautiful thing. Should I proceed or do you want to? Can you guys hear me? Yes. Still there? Okay. Yes. हाँ तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि if you can go back to the previous slide please श्वेता। तो पहले तो मैं आज तो बस देवेंद्र जी के स्कूल के बच्चे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट देवेंद्र जी आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए क्योंकि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ये जगह किसको कोई पहचान पाया? ये जगह इंडिया में बहुत फेमस जगह है ये। देवेंद्र जी आपके स्कूल में से कोई पहचान पाया ये जगह? चलिए आई डोंट नो, शायद मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं वो लोग अगर मैं गेस करूं?
हाँ शायद गेस करो। मरीन ड्राइव मुंबई है क्या? हाँ अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये मेरीन ड्राइव का फोटो है। तो जैसे कि देवेंद्र जी, आर दिस इज देयर, हाँ और हाँ शुड आई हाँ हाँ, पॉज? है सुनाई दे रहा है। मुंबई की हाँ है तो सर, मुंबई की है। जैसे कि हाँ हाँ मैंने बताया, तो हाँ जी मरीन ड्राइव। तो कभी भी आप अगर एक मिनट ऑयन, वॉइस नहीं आ रहा है अभी। just give him a minute or so, like he'll हाँ probably come. हाँ, एक सेकंड। ऑयन एक्चुअली रोड पे है एक इसलिए उसका। गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, और एक एक गाड़ी जब जा रही होती है, तो गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने तक उसका पूरा एक्सपोजर हमने लिया, उसका पूरा जो लाइट है वो पूरा रिकॉर्ड किया। इसीलिए गाड़ी, जो कि नॉर्मली एक लाइट एक पॉइंट पे होना चाहिए, वो पूरा एक लाइन में हो जाता है, क्योंकि उसी लाइन में गाड़ी गया है। इसका मतलब ये है कि उसी एग्जैक्ट लाइंस में जो गाड़ी हेडलाइट जला के गए हैं, इसीलिए से लाइंस बन जाता है फोटो में। तो सेम चीज होता है अगर हम सेम चीज करें स्टार्स के फोटोज के साथ, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है। उसमें क्या है कि या थैंक यू, उसमें क्या है कि अगर हम एक्सपोजर टाइम बढ़ा के रखें, कि अगर स्टार से बहुत देर तक लाइट कैप्चर करे, और इतना देर तक कैप्चर करें कि, क्योंकि जो आसमान, क्योंकि अर्थ घूम रहा है, राइट, धरती रोटेट कर रही है, इसीलिए हमको लगता है कि हमारे आसपास आसमान घूम रहा है एक्चुअली, राइट, क्योंकि सब कुछ ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में जाके अस्त होता है। तो उसी सेम चीज की वजह से उसको हमको लगता है कि आसमान घूम रहा है। तो अगर हम फोटो इतना ज्यादा देर तक ले, ताकि जो स्टार्स है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर चुके हैं उसी उस दौरान, तो वो फोटो कुछ ऐसे दिखेगा, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर कहीं से भी दें, क्योंकि एक पॉइंट है स्काई में, एक पॉइंट है आसमान में, जिसके अगल बगल सब कुछ घूमता है, जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। तो वो पॉइंट मूव नहीं करता है, उसके आसपास सब कुछ मूव करता है, एक सर्कल में मूव करता है। तो वही देखने को मिलता है इस काइंड ऑफ फोटो में। इस फोटो को हम स्टार ट्रेल बोलते हैं। जैसे कि श्वेता जी ने बताया, बहुत सारे लोग जो एस्ट्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है वो ऐसे फोटोज लेते हैं। ये एक्चुअली मैंने लिया हुआ है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बीच में जो सेंटर दिख रहा है, वो है साउथ पोल आसमान का। उस पोल के आसपास पूरा आसमान घूम रहा है, इसलिए ऐसे सर्कल सर्कल बन गया है। एक ईच लाइट का जो स्ट्रीक है, हर एक जो इसमें लाइट का जो लाइन है, वो एक एक स्टार के लिए है। एक एक स्टार वहां पे था, और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव हुआ जब तक मैंने ये फोटो लिया। आई थिंक ये मैं कुछ 1 घंटे तक लिया था। तो इसमें वही पता चलता है कि 1 घंटे में स्टार कितना मूव करता है आसमान में। तो ये जस्ट थोड़ा सा ट्रिविया आप लोगों के लिए। आई थिंक श्वेता कैन। This is a beautiful picture, Ryan. I didn't know that you took it. थैंक यू। Okay, so now we go to beyond naked eye astronomy. अभी पिछले क्लास में से we were looking at everything that we could do with bare eyes without the help of a telescope. Right now we will talk about what can be done when you use instruments, when you use telescopes, when you use radars. Right? So now we are transitioning into beyond naked eye astronomy. Right. So the first thing I want you to know is that electromagnetic spectrum extends way out of, so has regions that you cannot see. So visible spectrum is only a very small part of what is emitted. So think about it like this. So for instance, if I start heating a metal, right? So it'll first glow red, then it will keep becoming redder and redder, and at some point it becomes bluish, right? So like depending on how hot it is, it will emit in different colors. When it is little hot, then it will be red. When it is extremely hot, it will be bluish. And I think you would also have seen this in, for instance, fire. When you light up a gas stove, right? Like the hottest part of the fire is always blue, and the colder parts of the fire are like red.
So, but this is only a small part that your eye can see. What happens is the blues actually are something that we say is of higher frequency than that of red. And depending on how much energy it has, the color that you see will either be red or blue or somewhere in the spectrum of it. Also, there is electromagnetic spectrum um, that is longer in wavelength or smaller in frequency, before and after what you can see, right? So you have infrared, where you have wavelengths that is longer than what you can see. And then you have microwave that is longer than even infrared. And you have radio, which is even longer than microwave. So this is the longer wavelengths than visible light. Okay, so you probably are familiar with radio, which is the same signal that gets sent for, like, when you receive, I don't know, when you hear music on an FM radio. So it's the same wavelength that you hear. Microwave, again, if you for instance have a microwave oven or something, you would know that that's a different kind of radiation um, that is used over there. And infrared generally is associated more to heat, like hotter objects are thought of to emit infrared. You can probably, if you have had a chance, you would have also seen infrared cameras, for instance, which is used for security purposes. And then you have wavelengths that is shorter than visible light, which are mostly ultraviolet, X-rays, or gamma rays. Ultraviolet, we don't see that very much on the earth because it gets absorbed in the atmosphere by ozone, so we don't really see that. You have X-rays, which you probably are familiar with, the ones that doctors use. And then gamma rays are very, very energetic, which is also not very easy to find on earth. So when you have celestial objects, when you have objects in the sky, they tend, depending on how hot they are and what process is happening inside, they will emit anywhere in this range, most probably in multiple regions. Like you might have an object that will emit some amount of visible light, and then some amount of infrared, and maybe some amount of microwave. So it depending on what object you're looking at, it can emit signals across this band. So generally the way, an intuitive way to understand it is if it's a very energetic process, like for instance, if I am having a supernova emission, right? So initially the most energetic part will be seen in gamma rays or X-rays. Whereas when things cool down, you'll probably start seeing them in infrared and microwave. So and somewhere in between, you'll see things in microwave, right? So also, depending on which wavelength you want to look at, there are different ways you can do it. Like for instance, in this picture, you see examples of 3 different satellites. There's Hubble, जिसका picture आपने पिछले बार देखा था, where all the pictures of supernovae that you saw in 2-3 classes ago, they are from Hubble, right? So this one works in visible, ultraviolet, near infrared, so really close to this patch, right? The James Webb Telescope, the one in which you saw the Jupiter in like 3 slides ago, that works in near infrared. So you see this band where it shows like near infrared, a little bit of visible maybe. So that's where you see the James Webb. And then there was another satellite which was called Spitzer Space Telescope, which also operates in infrared. So depending really on what you want to see, there are different satellites that you launch. Okay, then let me go to the next slide. So generally you can break astronomy, when you say observational astronomy, you generally break them in. Sorry, excuse me, Sweta. I think next slide's done. Is should we just summarize the previous slide? Sure. Definitely, go for it. Because I thought it might be.
So मुझे because I have only one screen today, मुझे देवेंद्र जी के का वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे पूछना है देवेंद्र जी और उनके स्टूडेंट्स से कि आप में से स्टूडेंट्स को वेवलेंथ पता है, आपने ऑलरेडी स्कूल में कवर किया है, डू यू नो व्हाट वेवलेंथ इज, व्हाट फ्रीक्वेंसी इज? देवेंद्र जी? जी सर, आपकी आवाज थोड़ा वैसे आ रही है, ब्लर वैसे आ रही है, थोड़ा वो पूछ क्लियर रहे हैं नहीं हो कि पा रही है। वो पूछ रहे हैं कि आप लोग का स्कूल में आई बच्चों नो को मैं पता है बाहर कि हूँ, कोई श्वेता। वेवलेंथ हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसके बारे में जानकारी है? सर इतना पता है इनको कि जो सन रेज होती है वो थ्री टाइप्स की मैंने आपको इनको बताई है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। ओके। बाकी जो विजिबल लाइट है वो हम जो लाइट हम मतलब एक्सपीरियंस करते हैं आईज के द्वारा वो है, और इंफ्रारेड और जो अल्ट्रा वायलेट है वो हमको आंखों से डिटेक्ट नहीं हो पाती है। ओके। और जो नॉर्मल टेलीस्कोप्स हैं, इवन हबल टेलीस्कोप, वो विजिबल लाइट से मतलब ऑपरेट होता है। और जो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है और जो लास्ट में ये इंफ्रारेड से होता है। इंफ्रारेड काफी डीप तक पेनिट्रेट कर सकती है, जैसे कि क्लाउड्स हैं या फिर नेबुलास है, उनको भी पेनिट्रेट करती है। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। ओके। तो ये मैंने बता रखा है स्टूडेंट्स को। और हमारे साथ में सर एक जी अभी भी बहुत बढ़िया, ये भी इससे जुड़े हुए हैं सर, प्रोजेक्ट बहुत स्टाफ बढ़िया। के से। बढ़िया है। और सर मेरे किड्स हैं यहाँ पे, सृष्टि हेमंत, वो भी सर जुड़े हैं। उन्होंने शायद अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, पता नहीं किस तरह से, उनको याद नहीं रहा है यार। एक बार हाँ अपनी ठीक तरफ है, से कोई बोल दीजिए। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी। हाँ तो बेसिकली आपने जो कहा श्वेता जी ने वही कहा था, तो ज्यादा यहाँ पे समराइज करने का कुछ है नहीं। मैं बस यही बोलूंगा कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड तो आपको पता ही है, आपके स्टूडेंट्स को पता है होपफुली। उससे उसके अलावा भी जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि गामा रे और एक्सरे बोल के भी रेज होते हैं, वो भी एक तरह का लाइट है, वो भी हमको दिखता नहीं है, इंसान को आंखों में दिखता नहीं है, तो हम उसके लिए स्पेशल टेलीस्कोप बनाते हैं। और दूसरे छोर पे जो स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम, ज्यादा बड़े लंबे वेवलेंथ के जो एंड पे इंफ्रारेड के बाद में भी माइक्रोवेव और रेडियो वेवलेंथ होते हैं, जो वो भी हम देख नहीं सकते आंखों से, उसके लिए भी हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल टेलीस्कोप बनाते हैं। तो जैसे कि बाकी चीजों के लिए भी टेलीस्कोप्स हैं, गामा रे और एक्सरे भी कुछ कुछ स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं, कुछ कुछ एस्ट्रोनॉमिकल चीजें होते हैं कभी कभी आसमान में, जिससे गामा रे, एक्सरे ऐसे रेज एमिट होते हैं। और सिमिलरली माइक्रोवेव, रेडियो, ये ऐसे वेव्स भी एमिट होते हैं। वैसे भी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, वैसे भी कुछ कुछ चीजें हैं आसमान में, जैसे ये ऑब्जेक्ट एमिट होते हैं। वही नेक्स्ट स्लाइड में। श्वेता, आई थिंक यू कैन। I can take it थैंक over, यू right? सर, आपको बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। Okay. So generally, because of these different wavelengths in which astronomy can be done, we an observational astronomy is generally categorized depending on which wavelength you're focusing on. So generally, it is divided into radio astronomy, infrared astronomy, optical astronomy, UV astronomy, X-ray, or gamma ray astronomy. And depending on what phenomena you want to look at, one or few of them will be more suited than others. For instance, if you want to look at supernovae, right, a very a very good sort of a thing. Supernova is visible in actually all of them. Supernovae are they are very strong, so they have a lot of energy, but then you also have the halo that cools down, so they are pretty much visible in all of this astronomy. But there could be phenomena that are visible only in some of them. For instance, if you look at planetary nebula, they are much better seen in UV than you can see them, for instance, in infrared, right? Or for instance, if you look at a colder phenomena like planets are much colder compared to, say, a supernova explosion or an active galactic nuclei, right? So these
So these things, for instance, can be seen much better in infrared. So depending on what kind of a cosmic object you want to look at, you would choose which astronomy to go forward. And all of them also have a very different setup. For instance, radio astronomy is done with satellites that look like dishes, like your TV dishes. I mean, they're literally, you're trying to capture radio waves. So it's the system that you have looks very similar to the, like your radio antennas. But they're just big, and you have them spread out in a large area of the earth, so you can make them look like a huge dish. Then infrared, optical, so these are the other two very so infrared, for instance, is like James Webb, right? So these have infrared cameras in it, so these are like camera based astronomy. Or ultraviolet, on the other hand, has to be a satellite, because ultraviolet rays don't penetrate the atmosphere very well, they get absorbed by ozone. So all of the UV missions have to be space-based mission. Similar thing is true also for X-rays. Most of the X-ray missions are space-based. Gamma ray astronomy is very specific, and it depends how you do it, but also gamma rays are mostly space-based missions. Okay. Ian, do you want to summarize, or should I go forward? Yeah, sure. तो हाँ, इसमें समराइज कर मैं यही बोलूंगा कि जैसे कि लास्ट स्लाइड में हम बोल रहे थे कि बहुत तरीके के, बहुत डिफरेंट तरह के वेवलेंथ्स होते हैं, डिफरेंट तरह के लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, और वो डिफरेंट चीजों में हमको डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दिखता है. जैसे कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी में अगर हम फोकस करें, अगर हम बस रेडियो वेव्स देखें, तो उससे हमको सुपरनोवे या फिर जो पल्सार है, जो न्यूट्रॉन स्टार है, वो आपको याद होगा, हमने बहुत पहले या फिर सेकंड सेशन में उसके बारे में बात किया था. वो सब चीज हमको रेडियो वेवलेंथ में दिखता है. या फिर ब्लैक होल जब चीजें अपने अंदर निकल जाता है और फिर जो बाहर फेंकता है, वो भी वो रेडियो वेवलेंथ में इमिट करता है. इंफ्रारेड वेवलेंथ में अगर हम देखें, ज्यादातर हमको डस्ट दिखता है, मतलब कि धूल. जैसे कि हम यहाँ पे, हमको हमारा धूल है, धूल घर पे होता है, अर्थ में धूल है, वैसे एग्जैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ धूल है अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, वो भी ऐसे डस्ट पार्टिकल फॉर्म करते हैं. तो वो डस्ट देखने के लिए हमको इंफ्रारेड वेवलेंथ का इस्तेमाल करना पड़ता है. वो डस्ट हर बहुत सारी जगह में हो सकता है, वो प्लैनेट्स में हो सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स में, वो प्लैनेट्स के आसपास जो एक डिस्क होता है उसमें हो सकते हैं, जो जहाँ पे तारे का जहाँ वो पैदा होते हैं, जहाँ जो नेबुला है, नेबुला के अंदर हो सकता है. तो ज्यादातर डस्ट हमको दिखता है इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में, इंफ्रारेड वेवलेंथ में. ऑप्टिकल का मतलब है जो विजिबल लाइट है, जो हम आंख में, खुले आंख से देख सकते हैं. उस लाइट से तो बहुत कुछ देख सकते हैं. वैसे तो हम इमेज बहुत देख भी चुके हैं, ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमी एज श्वेता जी हैज सेड. अल्ट्रावायलेट जो है, थोड़ा और अगर दूर की तरफ जाएंगे, अल्ट्रावायलेट में क्या होता है, बहुत ही हाई एनर्जी जो प्रोसेस में इमिट होता है, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट इमिट होता है. जैसे कि ब्लैक होल्स, जब ब्लैक होल का जो प्रोसेस है उसमें अल्ट्रावायलेट होता है. सुपरनोवा, जैसे कि जब स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, उसमें अल्ट्रावायलेट इमिट होता है. सिमिलरली एक्सरे और गामा रेज भी हम अगर मेजर करें, तो ये जो बहुत ही हाई एनर्जेटिक प्रोसेसेस है, उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से उनके बारे में समझ सकते हैं. जैसे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है, ब्लैक होल कैसे अपने आसपास की चीजों को खा रहा है, ये सारी चीजों में एक्सरे और गामा रे जैसे और अल्ट्रावायलेट जैसे वेवलेंथ एमिट होते हैं. तो एक पर्टिकुलर इवेंट में, जैसे कि मान लीजिए ब्लैक होल, उसमें बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो रहा है, उसमें रेडियो से लेके गामा रे तक वेवलेंथ एमिट हो रहा है. तो हमको बस क्या करना है, हमको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट टेलीस्कोप बनाने पड़ते हैं. जो कुछ टेलीस्कोप रेडियो वेवलेंथ में देखेगा, कुछ टेलीस्कोप वही सेम ऑब्जेक्ट, वही सेम ब्लैक होल को वो गामा रेज में देखेगा. राइट. इट्स लाइक, अगर आप मान लीजिए, अगर आप बाहर गए, बाहर आपको पेड़ पौधा धूप सब कुछ है, नॉर्मल है. आप कभी मान लीजिए लाल कलर के चश्मा पहन लिए, या फिर मान लीजिए लाल कलर का चश्मा उतार के आपने ब्लू कलर का चश्मा पहन लिया. राइट. अगर जब लाल कलर का चश्मा पहन लिया, तो ज्यादातर आपको लाल चीजें दिखेंगी और लाल चीजें ब्राइटर दिखेंगी.
सिमिलरली आपने अगर ब्लू कलर का चश्मा पहना तो आपको जो भी आसपास आपका ब्लू कलर की चीजें हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से या फिर ज्यादा ब्राइटर दिखेंगे, बाकी कलर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। उसी हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट काइंड ऑफ चश्मा बनाते हैं ताकि हम ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ को स्टडी कर सके और उससे उनके बारे में जान सके। ओवर टू श्वेता। Okay. So one very nice thing, for instance, would be to see how a same object looks in different wavelength, right? So just to do a very small recap, going from a larger wavelength to smaller wavelength, we have radio followed by infrared followed by optical. Then you go to smaller wavelengths, which is ultraviolet, X-ray, and gamma. So generally, like most of the times in astrophysics, what we do is anything with a larger wavelength, we make it redder, or like is sort of assigned to a redder color, and anything that is with smaller wavelength is sort of colored in blue. Okay. So now we are looking at a Crab nebulae. And so the first image you see is the image taken in radio. The second one is the one that you see in infrared. Then you have the one in visible, which looks spectacular. And then you have in ultraviolet, you have in X-rays, and then you have in gamma rays. So you see how different the structures look in each one of these wavelengths, because you're really looking at different astrophysical phenomena. So when you're looking, for instance, in X-rays, you're actually seeing the jet phenomena, right? You're seeing something that's a very energetic thing. Whereas while you're looking at something in infrared, you're just looking something like a temperature gradient that is happening across this event. So it is like looking at the same object from different point of views. Okay, so that is what is happening with this. So, and this panel kind of shows you what are the different things that you can see in different wavelengths. In general, as Ian just sort of summarized, radio astronomy is sort of used for supernovae, intergalactic gases, pulsars, and active nuclei. Infrared is used for colder phenomena like looking at planets or exoplanets or circumstellar disks or nebulas, right? Nebulas are also visible in, see, this is a nebula. Crab nebula is a nebula. So nebulas are clearly visible in all of them, depending on what kind of nebula it is, of course, right? Then you have, again, ultraviolet. You can see planetary nebulas. You can see supernova remnant nebula. And also the supernova remnant itself, like pulsars, for instance, can also be seen. Not pulsars themselves, but like the accretion disks that pulsars feed into might be seen in ultraviolet. Same for X-rays. And then you have gamma rays, where you have short and long gamma ray bursts. So a short gamma ray burst, for instance, is something that happens when a black hole eats stuff from its accretion disk and then produces a very highly energetic beamed ray out. So that's what is called, that's what gives you a short gamma ray burst. So yeah, this is just to see how different wavelengths look. Okay. Should I just go forward, because you pretty much said these things, Ayan? Ayan? Oyan, I think, do you want to summarize? I don't know if you can hear. I mean, he just pretty much said it in the last slide. Yeah. I just will go forward, right? Okay. 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 So then the last kind of astronomy is something that does not use electromagnetic. Hello. Yeah. Sorry, Shweta. I think I got dropped off for a minute. Did you Want finish to the previous slide? summarize Do you want to say something about the previous slide? Yes. I wanted to. Just at that moment I got kicked out. Anyway. Yes. हाँ, तो इसमें जैसे श्वेता जी ने ऑलरेडी बताया, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट लाइट्स में देख रहे हैं, तो वही इस स्लाइड का मेन पॉइंट है। आप अगर इस स्लाइड में लेफ्ट की तरफ देखेंगे, जैसे कि जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ ऊपर रेड एरो है,
वहां पे है लार्जर वेवलेंथ, मतलब रेडर कलर। जितना कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर जितना लाल की तरफ होता है, उसका मतलब है उसका जो स्पेक्ट्रम है, उसका जो वेवलेंथ है, उसमें वो लार्ज है, वो ज्यादा बड़ा है। बड़ा वेवलेंथ के लिए can I still hear? Am I still there? Yes, yes, yes. We can hear you. हाँ हाँ। सो जो लाल की तरफ जब होता है कलर, तो वेवलेंथ बड़ा होता है। जब कलर ब्लू की तरफ होता है, और या फिर ब्लू के बाद भी जैसे अल्ट्रावायलेट एक्सरे का हमारे, तो वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने ऊपर जो आप एरोस देख रहे हैं, तो टुवर्ड्स लेफ्ट इन दिस ज्यादातर बड़े वेवलेंथ को की इमेज देख रहे हैं, ज्यादातर लाल की तरफ देख रहे हैं। और राइट में अगर देखें तो ब्लू नील की तरफ देख रहे हैं, तो वेवलेंथ छोटे हैं। तो उसमें क्या एग्जांपल्स है? एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, उसके बाद रेडियो वेवलेंथ है, उसके बाद इंफ्रारेड, विजिट्रावायलेट, एक्सरे, गामा में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है क्रैब नेबुला। वो एक नेबुला है, उसमें जैसे कि हमने 2-3 हफ्ते पहले डिस्कस किए थे कि नेबुला में स्टार्स का बर्थ होता है, वहां पे स्टार्स फॉर्म होते हैं। तो वैसे ही एक नेबुला है क्रैब नेबुला। तो उसमें उसको आपसे लाइट डिपेंड करते वो कैसा दिखता Oyan, you're dropping in and out. आवाज अंदर बाहर जा रहा है. एक मिनट रुक जा, मतलब he'll probably come back. है। रेडियो तो Ayan, जो repeat what लेफ्ट में you इमेज है said वैसे for the last 30 seconds. तो जैसे कि इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये है क्रैब नेबुला। नेबुला जैसे कि हमने डिस्कस किया था 2-3 हफ्ते पहले, वो है जहाँ पे स्टार्स का बर्थ होता है, जहाँ पे स्टार्स पैदा होते हैं। तो उसमें वो ऑब्जेक्ट, वो सेम ऑब्जेक्ट को कौन से वेवलेंथ पे देखेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा दिखेगा। जैसे कि विजिबल लाइट का जो इमेज दिख रहा है यहाँ से लेफ्ट से तीसरा वाला, वैसा दिखेगा अगर आंख से देखेंगे। आंख से मतलब आंख और टेलीस्कोप लगा के अगर देखेंगे, आंख में टेलीस्कोप लगा के देखेंगे, तो ऐसे दिखेगा विजिबल लाइट वाला जो इमेज है। अगर रेडियो वेवलेंथ पे दिखेंगे, तो जो लेफ्ट वाला इमेज है वैसा दिखेगा। और अगर गामा रे में देखेंगे, तो एकदम राइट वाला जो इमेज है वैसा दिखेगा। तो बात यह है कि सेम चीज है, सेम चीज का हम फोटोज ले रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ में, और कितना वो अलग दिखता है। रेडियो में जो दिखता है और गामा रेस में जो दिखता है, वो बिल्कुल ही अलग है। राइट, वो बिल्कुल अलग इसीलिए है क्योंकि कोई एक प्रोसेस है जिसके लिए रेडियो वेवलेंथ वो एमिट करता है, रेडियो वेवलेंथ छोड़ता है, और कोई एक कंप्लीटली अलग प्रोसेस है जिसके लिए वो गामा रे छोड़ता है। तो हम जब साइंस के पास होते हैं, तब वो लोग ये सारे प्रोसेसेस को, ये सारी चीजों को स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए इस स्लाइड का यही महत्व है कि एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में देखें, तो डिफरेंट चीजों के बारे में। आई थिंक यू कैन प्रोसीड नाउ। Okay, very good. So now we talk about the last kind of astronomy, which does not involve electromagnetic spectrum at all. So there are two specific kind of astronomies which we do, which does not involve light, visible or otherwise. And these are gravitational wave astronomy and neutrino astronomy. So gravitational wave astronomy is an astronomy where you use the fact that as things move in the space-time, the space-time itself sort of moves, or essentially it's like, as for instance, as two black holes go around each other, they will make sort of ripples in the space-time, very similar to how what would happen if, say, two ducks would be going around in water, and sitting on the edge of the pool, you will see a lot of waves coming to you, right? And so you can also take that kind of an information and understand what is happening inside. And this is a fairly new branch of astronomy. This has, for instance, the first time we saw a gravitational wave signal was in 2015. And generally the detectors you use is very atypical in the sense that they are not telescopes, they're interferometers, as in you have laser lights that go back and forth, and you sort of measure how much the space around space-time changes. That's what you want to measure over here.
So the things that you see in something like gravitational wave astronomy is very powerful because these are objects that you don't see in any other electromagnetic spectrum. For instance, black hole. So black holes that are as large as our sun, for instance, right? Or black holes that are, how do you say, that are few tens of times, like 30 times our sun, 40 times our sun. These things don't have accretion disks or other astrophysical phenomena around them that sort of light them up, like the black holes in the center of the galaxy. And this is something that we had talked about 3 classes before. So in the center of the galaxy, when you look at the black hole, it has a disk and which glows because it moves around and it produces a lot of heat and it glows. But if you have a smaller black hole, for instance, you don't have this phenomena very profoundly, and you don't see them in any other wavelength other than in gravitational wave. Same goes for neutron star. You cannot see neutron stars unless they are a very special kind of one with a very high magnetic field, in which case you can see in radio. But most other time you cannot see it. But you can see that in gravitational wave astronomy. Similarly, you have the other branch, which is the neutrino astronomy, which is also very interesting because this is sort of related to the radioactive decays of elements as the processes go. For instance, one of the nice thing that neutrino astronomy gives, for instance, is it tells you that a supernova is going to be happening in an electromagnetic band a little later. So because neutrinos don't interact with anything, you can see them before, and then you'll get a signal already that, okay, there is going to be a supernova in this direction around here, so you can point all of your telescope and see it later. So that's one of the things that neutrino astronomy does. And also you can see things like cosmic rays and stuff. So this is another more newer variety of astronomy that we have. Ian, you might want to summarize this. Sure. Am I audible? Yes, you are. Yes, yes. Okay. तो सॉरी मैं खुद ज्यादा ये सुन नहीं पाया जो श्वेता जी ने बोला, तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से समराइज कर दे रहा हूँ. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हम बोलते हैं, उसका सीधी भाषा में बोले तो लाइट जब ऑब्जर्व करते हैं, तब जैसे कि हम पिछले स्लाइड तक बोल रहे थे कि उसका रेडियो वेवलेंथ हो सकता है, अल्ट्रावायलेट हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ्स का लाइट हो सकता है, बट वो सारे ही लाइट है. चाहे रेडियो हो, चाहे गामा रे हो, चाहे वो सभी लाइट है. हर तरह का प्रकार, विभिन्न प्रकार के वो लाइट है, लाइट के वो ऊर्जा है. बट लाइट के अलावा भी हम एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, जिसमें हमको लाइट ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और ऑब्जर्व करते, कुछ और मेजर कर सकते हैं, विच इज नॉट लाइट. तो वैसा कौन से ऑप्शन है? उसमें 2 ऑप्शन एटलीस्ट है. एक है ग्रेविटेशनल वेव और दूसरा है न्यूट्रिनो, और ऐसे कुछ थोड़े और भी ऑप्शन है. तो इनका मतलब ये मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी, उसका मतलब यही होता है कि उसमें जो बहुत बड़े कोई अगर कोलिजन होता है, बहुत बड़ा, अगर कोई 2 चीज ब्रह्मांड में टकरा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए 2 ब्लैक होल्स टकरा रहे हैं आपस में, तो वो बहुत सारा लाइट तो छोड़ते ही है, बहुत सारा गामा रे, एक्सरे, ये सब तो छोड़ते ही है. उनके अलावा भी वो ग्रेविटेशनल वेव बोल के एक वेव का क्या बोलते हैं, ट्रिगर करते हैं, स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मान लीजिए कैसे बोले, जैसे कि मान लीजिए आपके पास तालाब है, ठीक है. तालाब अगर एक पत्थर फेंक के मारते हैं, वो पानी में जाके गिरता है. जब भी वो पानी में गिरता है, तो उसके आसपास जो हम बोलते हैं, या फिर छोटे छोटे वेव्स होते हैं, राइट, वो बड़े होते जाते हैं. फिर वो जहाँ पे पत्थर गिरा, वहां से वो बाहर जाए, राइट. वैसे ही सिमिलर वेव्स होते हैं, तो हम ग्रेविटी बोलते हैं. छोटे छोटे, अगर कोई तालाब में एक ब्लैक होल के फेंक सकते हो, तब ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट होगा, राइट. तो वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव होता है, और उस वेव को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. उस वेव को हम अगर डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको अगर स्टडी कर सकते हैं, उसको अगर हम पढ़ सकते हैं, देख तो नहीं सकते क्योंकि वो लाइट नहीं है, तो देख नहीं सकते, तो कैसे मेजर करेंगे?
बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि LIGO, लाइगो बोल के एक है, जिसका फोटो आप देख रहे हैं नीचे, जो राइट साइड का फोटो है। मैं am I still audible? Yes, you are. Hello? Yes, you're audible. Yes, you're audible. I think उसको हम लोग की बात सुनाई नहीं दे रहा। Ayan? ठीक है, वैसे भी इस स्लाइड में आई थिंक हम लोग का टाइम हो गया, तो इस स्लाइड में हम लोग खत्म कर देते हैं। हाँ, this is the last slide anyways. हाँ, तो वैसे भी देवेंद्र जी, अगर मैं तो ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा एंड उस हिसाब से Hello? वो Hi, हाँ, Ayan. हेलो। So मैंने कब drop out किया? Really sorry. I think we should wrap up now because it's past time anyway. I'm sorry ठीक है, guys. हाँ हाँ हाँ, वही ठीक है, इट्स ओके। तो आई थिंक देवेंद्र जी, वही मैं रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको भी मिल जाएगा और फिर हेमंत सृष्टि ये लोग को भी दिखा दीजिएगा। तो वो देख के अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो अगला सेशन में आई थिंक और श्वेता दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। तो वीडियो देख के अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो नोट कर लीजिएगा, अगला सेशन में ऑयन और श्वेता आंसर कर देंगे, क्योंकि इस सेशन में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज के वजह से शायद उतना भी अच्छा क्लियर ना And हुआ this हो। is also same for Shashi ji's class if she wants हाँ to see हाँ, it. वो भी मैं व्हाट्सएप में लिख And दूंगा। yeah, हाँ just let us know if you have a question in WhatsApp and we'll answer it. हाँ, तो मैं वीडियो जी, का बिल्कुल। लिंक व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा एंड कोई भी इशू हुआ तो अगला क्लास में हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है। ठीक है देवेंद्र जी। सर लास्ट सर एक बात ऐड करनी चाहूंगा। लास्ट हम्म, ईयर से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इसमें कुछ हमारे खगोल दूत हैं और कुछ हमारे जो सन है यार, हमारी जो डॉक्टर है, और मैं और हमारे एक सर हैं यहाँ पे बैठे हुए इधर, जिनसे एक उमेश कुमार जी सर, हमने अच्छा। सबने मिलकर मतलब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स कवर किए, जिसमें प्लेनेटरी जो कंजंक्शन है और ग्रेट प्लेनेटरी अलाइनमेंट अभी यहाँ पे जून के महीने में दिखा था इंडिया में, तो सारा कवर किया है सर टेलीस्कोप से। और वो मेरे पास वीडियोस हैं, सेव्ड हैं, और कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, आप चाहें बढ़िया। तो मैं उनको share कर दूंगा। हाँ, आई थिंक वो काफी अच्छा आइडिया है। आई थिंक हम लोग जो कर सकते हैं आस्ते आस्ते मे बी 1-2 वीक बाद एक सेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आप और आपके साथ जो भी काम किया है और आपके स्टूडेंट्स थोड़ा हम लोग को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, एक वीडियो हम लोग देख भी सकते हैं, पूरा एक सेशन या आधा सेशन ऐसे डेडिकेट करके वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो हाँ बिल्कुल। तो जरूर आई थिंक आस्ते आस्ते हम लोग का जो वेबसाइट है, जैसे आपको तो एल्गल ब्लूम वाला में भी आप है, तो आपको तो वेबसाइट में अपलोड करने का वो थोड़ा बहुत अंदाज है अभी, तो वैसा वन स्काई के लिए भी मैं एक वेबसाइट में बनाऊंगा जहाँ पे आप लोग फाइनली चीजें वीडियो जो भी ले रहे हैं वो डाल पाएंगे। तो वो सब भी थैंक डेफिनेटली यू। करेंगे, बट एक दो सेशन बाद जरूर ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग जो भी रिकॉर्ड किए हैं, बच्चे बाहर के लोग, सब कुछ आप प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा हम लोग को ये करेंगे जरूर। हाँ। ओके।